Auzubillahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello and warm welcome to all stakeholders of the global world. My name is Atif Saleem, but I am from Faisalabad, Punjab, Pakistan. You all are watching my YouTube channel. Kindly subscribe my YouTube channel and press bell icon for latest upcoming videos. Are you with me? Today I will elaborate you about latest cue cards. I am sharing different phases of latest cue card topic of Ielts. Describe a person, how you praise it, why this person is so vital for you, why are you considered as a praiseworthy personality, whether it would be considered a praiseworthy personality or other things. Please explain in detail. Case number 2. Describe one of your favorite travel destination. When were you reached in this particular destination? Why were you reached in this particular travel destination? Whether you were gained anything from this travel destination. Please explain in detail with examples. Your time is 1 to 2 minutes. Case number 3. Which person was widely regarded as one of the finest and greatest personality of your society? When you met this particular person, where this person is living, why are you feeling so much influence from this personality? Whether this person is vital for you, this person is increasing your efforts and so on. Please explain in details. Phase number 4. Your cue card topic is describe a person who is widely regarded as one of the most skillful person of your country. When will you met this particular person? Where this person is living nowadays? Whether this person is vital for your society? Explain with examples. I am moving towards phase number 5. Can you tell me about flagship quality? Why flagship qualities are essential for each and every one? Whether it should be considered as integral part of your life. How goals you should be achieved from flagship qualities. I am moving towards phase number 6. Are you ready for this? Describe a concept of time management. Why time management system is so vital for you and as a country or society? What impact should be created this time management system in your society? Whether it is considered as essential part of your life, what thing you will be gained from time management system, or what goal you should be achieved from time management system. I am moving toward phase number 7. Are you interested? What would be the impact of artificial intelligence in our society? Why artificial intelligence is necessary for our society? What goal you will be achieved from artificial technology? Whether artificial technology will be removed the modern scenario of life or human power in modern days or so on. Please explain in detail. I am moving toward phase number 8. What is the parent's role for the development and growth of children? Whether it is necessary? Why parents' role is so essential? What goal should be achieved by the young maid from the help of parents as well as teacher? How you can compare the teacher and parents from each other? I am moving towards phase number 9. Describe one of your memorable visit of museum. Why this museum was so vital for you? When was you visited this particular museum? Whether this museum is an essential part of your cultural values and norms. Please explain in details with examples. I am moving toward phase number 10. Are you ready for this? Would you like to attain a hotel manager job? Why this job is so vital for you? What strategy you will be performed in this hotel? Whether it will be considered as uplift strategy for the hotel as well as management. Are you giving anything for the clients? Are you performing anything extra for the clientage increment purpose? Please explain in details.
जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। सर्दी की शिद्दत खासी ज़्यादा हो चुकी है और मैं यहाँ पे आप सब की फैसिलिटेशन के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आज मैंने आप सब से जिस बारे में बात की है वो मैंने आइट्स के लेटेस्ट 10 क्यू कार्ड टॉपिक्स के बारे में बात की है। ये क्यू कार्ड जो है ये बहुत ज़्यादा आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इस पे आप सब ने प्रेजेंटेशन को अपनी रेडी करना है। प्रेजेंटेशन को आपने किस स्टाइल में रेडी करना है? प्रेजेंटेशन को आपने अपनी एक्सपर्ट इंग्लिश के रूल के मुताबिक आपने रेडी करना है। अब जब आप प्रेजेंटेशन में जाते हो या क्यू कार्ड में जाते हो ना, तो वहाँ पे गोरा ये लाजमी वॉच आउट करता है कि ये आज से 20 साल पहले कौन से लफ्ज़ का चुनाव कर रहा था और आज कौन से लफ्ज़ का इंतखाब कर रहा है, कौन सी वोकैबुलरी को साथ लेके चल रहा है, कौन सी रेंज को साथ लेके चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है या नहीं दे रहा। जैसा कि आपने क्यू कार्ड टॉपिक्स में देखा कि काफ़ी सारी जगहों पे मिसालें जो थी वो दरकार थी, तो वो पूछेगा कि ये मिसाल दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ सिर्फ टॉपिक को ऊपर से ही घुमा देता है। बहुत बात ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारी प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई हो गया। वहाँ पे वो हमारी करेक्शन नहीं करेगा। वहाँ पे प्रेजेंटेशन का टाइम है जनाब अली 1 to 2 मिनट्स। जैसे ही 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो वो हमें किस तरह साइन देगा, वो हमें सिग्नल देगा ओके का। जब तक वो हमें ओके नहीं कह देता तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन को जारी रखना है। यही टॉपिक 2023 में आ रहे हैं और 2024 में भी आ रहे हैं। आपने अपनी परफेक्शन का जो दायरा कार है ना वो दिन ब दिन आगे की तरफ लेके जाना है। आपने मेहनत करनी है, हार्ड वर्किंग करनी है। इंशाल्लाह कामयाबियाँ और कामरानियाँ आपका मुकद्दर बनेंगी। तो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने फॉलो कर लेना है और इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख्यालात का इज़हार कर लेना है। जज़ाकल्लाह खैर।